नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश की पहली कहानी अ लेटर टू गॉड। ये कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं है, बल्कि ये हमें फेथ, इंसानियत और जीवन की सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस वीडियो में हम करेंगे इस कहानी की पूरी आसान भाषा में समझ, साथ ही देंगे आपको एग्जाम में आंसर लिखने के कुछ बेस्ट तरीके भी। सबसे पहले बात करते हैं लेखक की। इस कहानी को लिखा है G.L. फ्यूंटेस ने, जो मेक्सिको के एक प्रसिद्ध लेखक और टीचर थे। उनकी कहानियों में मैक्सिकन गांवों की कल्चर, लोग और इमोशंस बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट होते हैं। अ लेटर टू गॉड उनकी सबसे प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से घर में, जो एक पहाड़ी पर बना है, रहता है लेंचो, एक हार्ड वर्किंग किसान। उसका घर दूर दूर तक अकेला दिखाई देता है, चारों तरफ खेत फैले हैं। लेंचो को अपनी फसल पर बहुत भरोसा है और इस बार उसे अच्छा प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, लेकिन वो एक चीज के लिए चिंतित है, बारिश। एक दिन शाम को आखिरकार बादल छा जाते हैं। लेंचो खुश होता है और कहता है, गॉड मेड पोर। बारिश शुरू होती है और थोड़ी देर में छोटे छोटे बूंदें गिरने लगती हैं, जो उसके लिए 5 सेंट के सिक्के की तरह लगती हैं। लेकिन जल्दी ही वो बारिश एक हेलस्टॉर्म में बदल जाती है। ओले गिरने लगते हैं और उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। लेंचो दुखी होता है। वो जानता है कि अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वो हार नहीं मानता। लेंचो भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। वो सोचता है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा। उस चिट्ठी में वो साफ साफ लिखता है कि उसे 100 पेसोस की जरूरत है, ताकि वो अपने खेत फिर से तैयार कर सके। लेंचो उस लेटर को गॉड के नाम भेज देता है, लिटरली एड्रेस टू गॉड। अब ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। पोस्ट मास्टर को ये लेटर मिलता है। शुरुआत में वह हंसता है, पर जब वो लेटर पढ़ता है, उसे लेंचो की फेथ देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। वो सोचता है कि अगर कोई भगवान पर इतना भरोसा कर सकता है, तो इंसानियत के नाते उसे मदद करनी चाहिए। पोस्ट मास्टर और बाकी ऑफिस वाले मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं। वो सिर्फ 70 पेसो ही इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन उन्हें खुशी है कि कुछ तो मदद मिल रही है। वो एनवेलोप में पैसे डालते हैं और उसे भेज देते हैं, फ्रॉम गॉड लिखकर। लेंचो को लेटर मिलता है। वो गॉड का धन्यवाद करता है, लेकिन जब वो पैसे गिनता है, उसे लगता है कि 30 पेसो मिसिंग हैं। उसे यकीन होता है कि भगवान ने पूरे 100 भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वाले ही चोर हैं। अब वो गॉड को दूसरा लेटर लिखता है, जिसमें वो कहता है, गॉड मुझे फिर से पैसे भेजिए, लेकिन इस बार थ्रू पोस्ट ऑफिस मत भेजिए, ये लोग चोर हैं। यहाँ हमें दिखता है स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, आयरनी। अब अगर आप एग्जाम में थीम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, द सेंट्रल थीम ऑफ दिस स्टोरी इज फेथ, होप एंड आयरनी। आयरनी ये है कि लेंचो को जिन लोगों ने मदद की, वो उन्हीं पर शक करता है। यह हमें दिखाता है कि अंधविश्वास इंसान को कितना ब्लाइंड बना सकता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर के आंसर्स कैसे लिखें। अगर आपसे लेंचो के कैरेक्टर पर कुछ पूछा जाए, तो आप शुरू कर सकते हैं। लेंचो was a deeply religious and hard-working farmer who had unshakable faith in God. अगर थीम या मैसेज पूछा जाए, तो हमेशा शॉर्ट हेडिंग के बाद एग्जाम्पल देना हेल्पफुल होता है। जैसे, The story shows that faith can move people, but blind faith can also lead to misunderstanding. हमेशा मॉरल पॉइंट लिखते समय 2 से 3 लाइनों की कंक्लूजन जरूर दें। जैसे, The story teaches us to believe in goodness and humanity and to not let blind faith cloud our understanding. If you've come this far in the video, don't skip now, because what's coming up next are the top 10 most important long answer questions from the story, A Letter to God, with clear, book-based answers. Let's dive in. Question 1. Why did Lencho write a letter to God? What does it show about his faith? Lencho was a poor and honest farmer. When his crops were destroyed by the hailstorm, he had no one to turn to. He believed so strongly in God that he wrote him a letter asking for 100 pesos. This shows Lencho's deep and unquestioning faith, a belief that God always helps those in need. Question 2. How did the postmaster and his employees help Lencho? What does this show? When the postmaster read Lencho's letter, he was touched by his faith. He collected money from his staff and sent Lencho 70 pesos in an envelope, signed God. This act of kindness shows that humanity still exists. People can go out of their way to protect someone's belief. Question 3.
What is the irony in the story, A Letter to God? The biggest irony is that Lencho thinks the very people who helped him, the post office workers, are the ones who stole from him. He asks God not to send money through the post office again because he believes they are dishonest. But in reality, they were the ones who showed compassion. This is called situational irony. Question 4. What kind of person was Lencho? Describe his character. Lencho was hardworking, faithful, and innocent. He trusted God blindly and had complete confidence that his letter would be answered. But his simplicity also led him to wrongly accuse others. He believed only in divine help and not human efforts. Question 5. What does the story A Letter to God teach us? The story teaches us the power of faith and the importance of kindness. It shows how strong belief can inspire action, even among strangers. But it also warns us about blind faith, which can sometimes make us misunderstand reality. Question 6. How does the story reflect the theme of faith and hope? Lencho's letter is a symbol of faith. Even when everything is lost, he has hope that God will help him. That hope inspires others to come together and support him. The story reminds us that faith and hope can keep us going even in the worst times. Question 7. Describe the setting of the story. How does it add to the mood? The story is set in a peaceful rural area where Lencho lives with his family. The calm and happy mood turns sad and serious after the storm hits. This change in setting adds emotional depth and helps us feel what Lencho is going through. Question 8. Why did Lencho become angry after receiving the letter from God? Lencho believed God had sent the full amount. When he got only 70 pesos, he assumed that someone from the post office had taken the rest. He couldn't imagine that the same people had helped him. This shows the danger of blind faith and misunderstanding. Question 9. What role does the postmaster play in the story? The postmaster is a key character who turns Lencho's faith into reality. He leads the effort to collect money and sends it anonymously. His actions represent silent kindness and the human value of empathy. Question 10. What literary devices are used in A Letter to God? The story uses irony, symbolism, imagery, and characterization. Irony is seen when Lencho misjudges the helpers. Symbolism is shown in the letter. Imagery is used to describe the storm, and the characters are built to reflect real human emotions. All these devices make the story powerful and memorable.